Hi everyone, so my name is Yusuf. I'm a third-year student at HKU studying psychology and neuroscience, and I'll be sharing my experiences with COVID as a university student. I first and foremost want to say that, of course, I do have a sense of privilege that, I think the COVID cases in Hong Kong have been treated and handled way better than it has been in developing countries, especially countries like India, Pakistan, Nepal, and I think that overall I am grateful for the experiences I've had regardless of whether they've been cancelled by COVID or not. And I think one key thing that I learned from COVID is that I really learned to be more grateful for the opportunities that I have, the relationships I have with people. And, but yeah, I think just going into the whole topic of how COVID affected me, it wasn't super major. I remember it happened, I think, like right after Chinese New Year in 2019 was when it started, but then 2020 was when it got serious. And I think this was right after the protests. So during the protest time, I didn't have my university held face-to-face. It was all online. So basically in my entire university life, my first four semesters of year one were face-to-face, and then it was online, and then year two was all online, and then year three, which is the year I'm in, the first semester was face-to-face, and then now it's kind of unsure. And I think it really affects people who go overseas for exchange because sometimes they get cancelled. And for a lot of courses that require lab or practicals, it also gets cancelled, or so that means we don't get to learn practical skills. We just end up just learning from the book. And I think when it comes to Zoom classes, it's not very effective because essentially you can just do it in like your own bedroom, right? Like no one is monitoring. You can turn off your screen, you can turn off your you can mute yourself. So there's no sense of self-discipline, and that's what I realized when we first started with this whole Zoom thing. I think at first it helped me because it meant that I can at least sleep at a later time, but I think overall I just got lazier and lazier, and it really tested my own motivation and self-discipline. So I think that's one of the biggest things I would say that affected me, as long as like kind of cancelling a lot of the opportunities that I had with internships, with businesses, with companies, because I couldn't attend their events, and even if they were online, it wasn't as interactive and it wasn't very informative. So yeah, that's how it affected me as a university student. हेलो एवरीवन, आज मैं कोविड के हवाले से आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि अभी हम सब कोविड के दौर से गुजरे हैं, तो हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक बोरिंग भी हो चुकी है, मुश्किल भी हो गई है, चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो बोरिंग इस वजह से क्योंकि हम पहले की तरह बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, तो अक्सर हमें जो है वो घर पे रहना पड़ता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ हम वैसे बाहर जाके घूम फिर नहीं सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ बोरिंग हो गई और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। आप बाहर जाते हो, मास्क पहनना पड़ता है, और ये जो है आप एक खुली सांस भी नहीं ले सकते। दूसरा ये कि जैसे मैं काम करती हूँ तो अक्सर होम ऑफिस भी करना पड़ता है। होम ऑफिस जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आप घर पे वैसे फोकस नहीं कर सकते जैसे आप ऑफिस में कर सकते हो। तो ये कि जैसे मैं लास्ट ईयर जो है वो ट्रैवल भी किया था, तो ट्रैवल करने के बाद जब मैं हांगकांग वापस आई तो मुझे 21 दिन का क्वारंटीन भी करना पड़ा था, जो कि बहुत मुश्किल था। तो कोविड की वजह से ये हम ट्रैवल भी वैसे नहीं कर सकते आसानी से जैसे पहले हम बिना किसी फिक्र के करते थे। तो ये क्वारंटीन भी हमें करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। 21 दिन के लिए हमें एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है, टेस्ट भी कितने सारे करवाने पड़ते हैं, तो काफ़ी जो है वो चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। लेकिन ये है कि जैसे हम घर पे रहते हैं तो हम फैमिली को भी टाइम जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हम पहले हो सकता है काम पे हो या स्कूल में होते थे तो हम फैमिली को जो है वो टाइम नहीं दे सकते थे, बैठ के हम खाना एक साथ नहीं खा सकते थे या बातें नहीं कर सकते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें ये कि हम घर पे जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कोविड जो है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो जैसे पहले थी वैसे दोबारा से गुजार सके। हेलो, मैं मिस किरण हूँ लिंक सेंटर से। आज मैं आप लोगों के साथ कोविड के हवाले से अपने साइड की फीलिंग्स और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब से कोविड ये पेंडेमिक शुरू हुआ है, हम सब की जिंदगियों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है।
हम एक मुश्किल वक्त से, एक दौर से गुजर रहे हैं। हमें अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही है। हमारे अंदर काफ़ी खौफ है ये बीमारी कब ख़त्म होगी, या ये बीमारी कहीं हमें लग ना जाए, या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस और कितने बढ़ेंगे। इस तरीके के हमारे अंदर खौफ है। बीमारी के बढ़ते हुए मुझे भी काफ़ी डर लगा रहता है कि मेरा बच्चे को ना लग जाए, या मेरे वालिदैन को ना लग जाए, या मेरे को खुद को ना लग जाए, या ये डर लगा रहता है कि आगे और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस में और कौन से पाबंदियां लगेगी। काफ़ी और भी चेंजेस आई हैं। जैसे पहले बच्चे स्कूल जाते थे, अभी बीमारी जो आई है, नया वायरस जो कोविड की तरह है, ओमिक्रॉन नाम है, अभी फिर से स्कूल बंद हो गए। जब स्कूल बंद हो जाते तो जो मेरा बेटा है वो घर में जूम क्लास में उस तरीके से पढ़ नहीं पाता, तवज्जो नहीं देता है। तो स्कूल जाने से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, काफ़ी अच्छे पढ़ते हैं। जूम में उस तरीके के नहीं पढ़ सकते जैसे स्कूल में होता है। मुझे भी आजकल कभी कभी घर से काम करना पड़ रहा है क्योंकि कोचिंग में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। जब घर से काम करती हूँ तो मैं खुद भी तवज्जो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि घर में सब होते हैं। छोटा बच्चा है, बेटा है मेरा, और साथ में घर में हमारा पैट है, एक बिल्ला कैट है। तो बस ओवरऑल इस तरीके से घर से भी काम नहीं कर पाती हूँ जिस तरीके से पहले हम ऑफिस में करते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं तो बाहर जाते हैं, तो अच्छे तरीके से हमारा काम का वक्त गुजर जाता है। अभी तो सारे काम टेक्निकल हो गए, हमें एप्स में, जूम में करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें कंप्यूटर में गुजारना पड़ता है, अपने फ़ोनों में गुजारना पड़ता है कि मैसेजेस आएंगे काम वालों के, या वर्क फ्रॉम होम है तो तवज्जो पूरा देना पड़ता है। और ये भी मेरे एक मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान पिछले साल नहीं जा सकी। मुझे पाकिस्तान जाना था दोस्त की शादी पे, बट बीमारी के बढ़ते हुए मैं नहीं गई। और ये भी था कि क्वारंटीन करना पड़ेगा 21 दिन, वो भी छोटे से रूम में, और होटल को भी पैसे देने पड़ेंगे, होटल रूम को, वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये सोच के फिर मैंने अपना पाकिस्तान का प्लान भी कैंसिल कर दिया। फिर काफ़ी खुश थी कि चलो यहाँ पे भी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, उसकी वो सोच कर के चलो कोई खुशी तो आ रही है। वो भी अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, तो इस वजह से उसकी शादी भी पोस्टपोन्ड हो गई। ये भी एक इफेक्ट ही हो गया कि कुछ छोटी मोटी खुशियां आ ही रही होती है कि बीमारी बढ़ जाती है और पाबंदियां ज्यादा सख्ती से लगी जाती है। गवर्नमेंट का भी कोई कसूर नहीं है। हांगकांग छोटा सा शहर है और यहाँ पे बीमारी एकदम से लग जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो हमारे हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। बस दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम पहले की तरह एक आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। आप अपना ख्याल रखें आप सब, और दुआ करें कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। Hi everyone, I'm Miss Dora. Happy to share with you about my story under COVID. COVID didn't affect me a lot in the past few years, as I'm living in a countryside. However, I came back to Hong Kong last year in December, and COVID did affect me a lot. I have to learn all the new skills in the computer, such as the Zoom class, and all the outdoor activities that we cannot go. It's what not I expected. However, life didn't go easy as you think. It's always give you such a challenge. The point is that, can you open up your mind? Can you face it? I believe that COVID is not came accidentally. It always came with a reason. More importantly, is that we can discover the message behind the COVID and also discover yourself more behind the COVID. Otherwise, COVID comes without any meaning if you cannot have any personal growth. You learn nothing from that. So let's take this chance to know more about yourself, your beliefs, and your values, rather than
complain or to fight with this situation. So I wish all the people be happy, be peaceful, and hopefully we can go with this situation together with our kind and peaceful mind. Hi everyone, I'm Miss Fa from Link Center. Today I'm going to share my own story under COVID-19 with you. There are so many changes happen in my daily life. One of the special changes is about to do video recording. In the past, I refused to talk, to speak, even to stand in front of the camera, as I'm a bit shy and will feel embarrassed in front of it. But now, if you are a big fan of Link Center's Facebook page, you can see that I've done some of the online programs. Due to the change of working environment and platforms, now I'm there to talk in front of the camera, and also I get used to it. It is a quite big change in my personal growth.